Hi everybody. So this is our continuation of F5 LTM. So today's session is about HA part, like high availability. So this session is about theory, and next session will cover the lab because the session will be long. So that is the reason. Okay. So if you're watching this session first time, I will suggest to watch from one by one so that from we can say like from lecture one, so that we can understand all the concept and this session will cover HA and its some terminology which we use in the F5 LTM. See, HA concept is same guys for every vendor like whatever F5 checkpoint Palo Alto. Concept सबका same है, right? Theory part same है. Some terminology is different. Like in case of checkpoint, we have the control cluster control protocol work in the backends while communicating between while synchronizing between data in between two devices. In case of F5 LTMs, some terminology different which we'll see in this slide. Same for Palo Alto guys. Okay. So HA we use for redundancy purpose. सबको पता like we use HA for the redundancy purpose. Like we have two boxes in HA. So if one box goes down, and the people who is seated maybe outside who is accessing our the backend server which is hosted behind our F5. If this box is down, this traffic will handle by this box. So so that there will no any impact in the production. So such types of to avoid such types of things we can use HA, right? So हम disruption को avoid करने के लिए use करते हैं HA in our productions. Okay. So इस redundancy मैंने इसका होता है, right? आज के डेट में गाइज वी हैव रिडंडेंटी पावर सप्लाई इनफिन की पावर सप्लाई के केस में भी हैव एच वी कैन से लाइक रिडंडेंसी आ रहे हैं लाइक सिंगल बॉक्स वी हैव टू पावर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं if this maybe this PSU maybe power supply unit is maybe faulty, so still this box will be up and handle because one another um, power supply is ready. And then we have redundancy on ISP level nowadays also guys. We have like maybe this is our router, maybe your company routers, and maybe this is ISP1 router, ISP2 router, maybe consider this is Tata, and this is Airtel, maybe consider, right? So if Tata is goes down, traffic from inside, which want to go on the internet, will handle by another ISP. So this is how we design the company also. So we have redundancy on ISP level also. Even we have redundancy on the hard disk level also, guys. Redundancy array of independent disk. So red independent basically redundant array of independent disk, guys. So आज के डेट में डिस्क लेवल पर भी हम redundancy के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? अगर एक डिस्क मान लो हमारा करप्ट हो गया, सो सेम डेटा इज स्टोर इन अनदर डिस्क ऑल्सो. सो वी डोंट lose anything and we do not miss anything related to data perspective, guys. So how redundancy is important. Even on switch level also we use redundancy with the help of like LSCP, or even like LSCP, or there is another protocols. So we use redundancy on switch level. So we are putting two physical interfaces and as a single logical interfaces. Okay. So in this case, क्या benefit होगा guys? We utilizing if this interface goes down, still traffic is handled by another interface, right? And maybe this interface bandwidth for GBPs we can consider, and this interface bandwidth may be 4 Gbps, right? So if you're combining two as a logically one, so we have 8 Gbps, right? Right. So we have a proper bandwidth to send the traffic in between source and destinations, right? So high availability over we already covered, guys. Same things we use for the redundancy purpose. And there are some modes guide in HA, like we have active and standby. Like in case of active and standby, this box is active and this is a standby. And if this box is down, then this will take a roll back. Okay, and this will act as active, and traffic will handle by this box. So this is called active standby. In active standby, one ATM actually manage traffic while other is synchronized. So क्या होता है guys? एक्टिव जब रहता है ना ये, इससे ट्रैफिक हैंडल होते हैं और सारी चीजें सिंक्रोनाइज होते रहते हैं, राइट, इन बिटवीन डिवाइसेस, सो दैट अगर ये डाउन गया इट विल हैंडल बाय दिस. ओके, perfect. We don't need to read much theory, guys. Concept is required, so only we need to focus on the concept. Okay.
So we'll see similar types of setup in our labs. We have server 1, server 2, server 3, and we'll put our two F5 devices in HA, and these are the external client which is seated on the internet. और वो हमारे वर्चुअल बैकएंड सर्वर को एक्सेस करेंगे, एंड इफ this box is down, still they will access via this box. Okay, so we'll see these things in our upcoming sessions, like next sessions where we'll perform the live. In case of activity, guys, both boxes, in case of activity deployment, both LTM in the pair are active and processing traffic. In active F5 mode, guys, both the units can be active at the same times. Okay, so active क्या होता है, guys? Active as per my experience, 99% organization use active as standby concept. Active basically very less use. It depends upon the business need and it depends upon the design, guys. So in case of active both boxes handle the traffic. Okay, like active, this is the active, this is also active, so both are handling traffic same times, right? And if this box goes down, 100% traffic is handled by this. Okay, so अगर ये बॉक्स डाउन जाता है उस केस में सारे ट्रैफिक इससे हैंडल होगा, बट इन केस ऑफ एक्टिव मे बी वी कैन से 50-50 ट्रैफिक हैंडल बाय बोथ द बॉक्सेस. Okay, so in active A5 we can make full use of hardware available. Okay, so in case of activity गैस क्या होता है कि हम दोनों हार्डवेयर को सेम यूटिलाइज करेंगे, मतलब फुल यूटिलाइज करेंगे, राइट? इन केस ऑफ एक्टिव स्टैंड बाई क्या होता है कि कभी कभी वो कई सालों तक पहला बॉक्स से द्वारा ट्रैफिक हैंडल होता है एंड सेकंड बॉक्स इज कीप एज स्टैंड बाई, उसका यूज ही नहीं होता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं गाइस, समटाइम we do some failover and testing purpose in the during some particular specific time to get the flow, verify कि like अगर हमारा failover होता है तो ट्रैफिक पर कोई इम्पेक्ट तो नहीं हो रहा है, राइट? So such types of things we do, right, in the production also, right, under our process. So this type of strategy may be seen where we have limited hardware in the F5 units. With an active based deployment, traffic is processed by both devices. So इतना आप समझो कि in case of active both devices just handle the traffic. आपको इंटरव्यू में इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, राइट? परफेक्ट. सो इन केस ऑफ एक्टिविटी क्या होता है गाइज, मान के चलो ये दो ट्रैफिक इज हैंडल बाय दिस बॉक्स एंड मे बी अनदर टू क्लाइंट्स ट्रैफिक हैंडल बाय अनदर बॉक्स. दिस इज how active work. Okay, HA prerequisite क्या होता है guys? So we have like same boxes, like hardware model, if it's physical VM OS versions, and so this should be important. Okay, to set up high availability HA mode need a pair of the LTM mid following. Okay, the same model. Okay, the F5 LTM in the pair must of the same hardware model, guys. The big IP units in a redundant system must run the same software versions. Like if it is one of the version like 17.1.4, another is a 16.1.5, so it will never build a HA and so break our HA. So if I don't support BIP redundant configuration and different software versions, अगर different software version हो तो वो support नहीं करेगा. So these are prerequisites. और ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं guys कि what are the prerequisite to build both devices in HA. In BIP systems, redundant configuration must run the same hotfix versions. So अगर hotfix आप install किए हो guys, तो hotfix भी same होना चाहिए to both the boxes. If I does not support redundant configuration run different hotfixes, अगर different hotfixes है, it is very difficult to make HA. Okay, so these are the prerequisites we should aware. So that is enough. We don't need to read much theory, guys. Okay, very important. We have some terminology like HA, terminology like failover. तो आपको फेल ओवर के बारे में जाने कि व्हाट इज फेल ओवर. फेल ओवर आपको बस वही है गाइस, इतना ही है कि अगर मान लो टू बॉक्सेस है, अगर वन बॉक्स गो डाउन, ट्रैफिक इज हैंडल्ड बाय अनदर बॉक्स बिकॉज ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इज सिंक्स फ्रॉम एक्टिव टू स्टैंड बाय. ओके, उसको हम फेल ओवर मैकेनिज्म कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं. फेल ओवर मतलब किसी भी रीजन के वाट एवर द कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डन फ्रॉम मॉनिटरिंग पर्सपेक्ट. मान लो मान के चलो हमारे आउटसाइड इंटरफेस डाउन हो गया, इनसाइड इंटरफेस डाउन हो गया एंड फेल ओवर रिकॉर्ड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फेल ओवर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी. ओके, devices guys, devices may be our physical devices, may be our virtual devices. So devices आपको पता ही, you don't need to focus much here, right? Then we have device group, very important, and then they generally ask in the interview also what a device group. So आपको नाम से indicate होता है कि right, like you are putting two devices, right, in a group that is called device group, right? So device group is a collection of big IP unit that have established a device trust and shared data. So क्या होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज होते हैं, मे बी फिजिकल डिवाइसेज और मे बी वर्चुअल डिवाइसेज. ओके, एंड बोथ एस्टेब्लिश ट्रस्ट टू शेयर द डेटा इन बिटवीन एक्टिव टू स्टैंड बाय, इन बिटवीन वन टू अनदर. ओके, type of data set depends on what type of data the device group is configured. Related to
कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू शेयर द डेटा इन बिटवीन डिवाइसेस गाइज, ये डिपेंड्स कि आपने डिवाइस ग्रुप में कौन सा टाइप यूज किया, लाइक सिंक ओनली यूज किया है और सिंक फेलोवर यूज किया है। वेरी 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 वाइडली आस्क्ड इन द इंटरव्यू कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड सिंक फेलोवर, हम देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा शेयर्ड होगा इन बिटवीन डिवाइसेस। सो डिवाइस ग्रुप आपको इंडिकेट हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिवाइसेस, ओके। टू टाइप्स ऑफ होते हैं डिवाइस ग्रुप गाइज, फर्स्ट होता है सिंक ओनली होता है एंड सेकंड होता है सिंक फेलोवर, ओके। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज सिंक फेलोवर। हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं फिर डिवाइड ट्रस्ट में आएंगे, ठीक है। सो सिंक ओनली में क्या होता है गाइस, सिंक ओनली में क्या होता है कि अगर मान लो आपका टू डिवाइसेज इन एचए में है, राइट, ठीक है। सो वो डिवाइस इन एचए एंड डिवाइस ग्रुप में आपने सिंक ओनली कंसिडर करके रखा है। सो इट इज नॉट गोइंग टू सिंक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अगर मान के चलो दिस बॉक्स इज एक्टिव एंड दिस इज स्टैंड बाय, राइट, एंड if this box is go down, not all the not all the traffic is synced to the standby which is active at the moment, and maybe user will face in the disruption in the production, okay। sync only में क्या होता है guys, only some things are synced like IApps, iRole and some profile, not like virtual server nodes and other stuff. It is not good, right? So sync only में some limited things are synced, not all the configuration are synced. So if failover occurred in the production, guys, user will face the disruptions, okay। So it is very very important to understand of device group types, that is sync only and sync failover। so ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। सिंक फेलोवर में क्या होता है गाइज कि मान के चलो ये दो हमारा बॉक्स है, राइट। मैंने आपको बता दिया कि सिंक ओनली में ओनली सम लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन इज सिंक, लाइक आई एप्स, आई रूल्स एंड सम पॉलिसी, नॉट ऑल द थिंग लाइक वर्चुअल सर्वर नोड एंड ऑल, राइट। व्हाट इज इन लाइक इन केस ऑफ सिंक फेलोवर क्या होता है गाइज, इन केस ऑफ सिंक फेलोवर क्या होता है, all the configuration like whatever we need to just do the basic configuration like network VLAN part, self IP and floating our self IP and floating IP, and rest whatever changes we are doing here like virtual server creating node pool like I rules and all other profile like client profile setup, everything is going to sync to the standby box, okay। and if this box is down, traffic will handle by another box and there will be no any disruption to the end users or maybe the user who is seated on the internet to access our all the backend server, right, by backend application which is hosted our we can say like behind our F5 load balancer। so this is the difference between sync failover and sync only, right। ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, ओके। उसके बाद में कहा जाता है डिवाइस ट्रस्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिवाइस ट्रस्ट मींस होता है कि लाइक हाउ बोथ डिवाइसेज आर गोइंग टू ट्रस्ट टू ईच अदर। so generally with the help of certificate, both devices are going to trust to each other so that they can build the relation, they can build the HA part, we can say like। so device trust represent trust relationship between devices, also known as trust domain, guys। so device trust in local traffic manager is achieved via certificate based authentication। आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे तब बता सकते हो कि it is achieved by the certificate based authentication। कैसे authentication होता है guys, with the help of certificate, and by default it's through the management interface while communicating related to authentications, we can say like from certificate perspective। so big IP system device trust is a prerequisite for both devices group and traffic groups, okay, to provide failover or configuration LTM on network must be in the same trust domains, okay। so this is the device trust guys, तो आपको इतना जानना है, okay। ट्रैफिक ग्रुप होता है एक टर्मिनोलॉजी इन और ए5, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन डिवाइस ग्रुप हमने देख लिया, देन डिवाइस ट्रस्ट गाइस, डिवाइस ट्रस्ट एंड देन वी हैव ट्रैफिक ग्रुप। से दे आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ट्रैफिक ग्रुप में डिफाइन होता है गाइस हाउ फेल ओवर हैपन, राइट। सो मान के चलो हमारा टू डिवाइसेज है इन ग्रुप, राइट। So how failover should be occurred, like related to traffic flow, how traffic should we follow in case of failovers. So these things happen in traffic group, guys. Okay. So traffic group is a collection of related configuration objects that run on big IP systems. So a collection of failover objects that run on one of the devices within the device group. Okay. सो इसमें क्या होता है गाइज कि मान के चलो कि हमारे डिवाइसेज पर प्राइमरी वन अनअवेलेबल हो तो सेकेंडरी हाउ शुड बी बिहेव, हाउ शुड बी एक्ट एज एक्टिव, वो सब चीजें डिफाइन होते हैं ट्रैफिक, हाउ ट्रैफिक शुड बी हैंडल इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, ओके। so should the device become unavailable, failover object is served by the other device in group। so in general, traffic group makes sure that when a device becomes unavailable, guys, all of failover objects in the traffic group fail over to standby systems in a device groups। so इसका मतलब यही होता है कि जब फेल ओवर होता है गाइस व्हेन डिवाइस बिकम्स अनअवेलेबल, कोई भी एक, ऑल ऑफ फेल ओवर ऑब्जेक्ट्स इन द ट्रैफिक ग्रुप में जितना भी फेल ओवर ऑब्जेक्ट्स हैं
it is going to be fail over to a standby systems in the device group. So this is defines in a traffic group. Okay guys, then we have sync concept. So we have manual syncs and we have automatic sync. So ये सब चीजें हम जब लाइव करेंगे अपकमिंग सेशन में तो हम ज्यादा वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? सो डोंट नीड टू फोकस मच थिंग देयर. देन वी हैव कनेक्शन मिररिंग. कनेक्शन मिररिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस. कनेक्शन मिररिंग क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर दिस इज बॉक्स और दिस इज एक्टिव एंड दिस इज स्टैंड बाई. सो मान के चलो यहाँ पर परसिस्टेंस और फाइल हमने कंपेयर करके रखा है एंड सम अदर टीसीपी प्रोसेस इज हैपनिंग. सो अगर दिस बॉक्स इज गो डाउन, सो अगर मान लो इसका मिररिंग नहीं होगा, इधर सारे कनेक्शन शिफ्ट नहीं होंगे, व्हाट एवर द परसिस्टेंस एंड कनेक्शन एंड परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन. सो मान के चलो जो भी यूजर है विच इज ऑन द इंटरनेट, वो बैकएंड सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, दे विल फेस डिसरप्शन. सो कनेक्शन मिररिंग इंपॉर्टेंट टू जो भी यहाँ कनेक्शन बने हुए हैं ऑल शुड बी मिरर मतलब वी कैन शुड सिंक टू द पीयर डिवाइसेस. तो इसमें कनेक्शन मिररिंग जहाँ पर हमारा परसिस्टेंस इंफॉर्मेशन हो, कनेक्शन हो, सब सिंक हो जाते हैं. देन कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन वी नो वेरी वेल. लाइक देन वी हैव नेटवर्क फेलोवर गाइस. नेटवर्क फेलोवर क्या होता है गाइस? देखो ए फाइव में क्या होता है कि टू टाइप्स के फेलोवर होते हैं. एक आप सीरियल सीरियल केबल यूज होते हैं टू फेलोवर, लाइक हाउ फेलोवर शुड बी कनेक्ट, लाइक हाउ एच ए शुड बी कनेक्ट, ऐसे आप मान के चलो. फेलोवर इंटरफेस जैसे मान के चलो एच ए इंटरफेस इन शॉर्ट आई कैन टेल यू, राइट? सो नेटवर्क फेलोवर में हम क्या करते हैं, ईथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं, जो भी हमारा उसका एक्चुअल पोर्ट है, लैन सपोर्टेड पोर्ट वी कैन से. सीरियल एंड यूएसबी डोंट नीड टू यूज. तो इस केस में क्या होता है कि अगर डिवाइसेज आपका मे बी नॉट इन नियर, मतलब पास में भी नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, इन बिटवीन स्विचेज है, तो हम उस केस में इस एच ए को अचीव कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ सीरियल फेलोवर, वहां पर हमारे डिवाइसेज दोनों पास में होना जरूरी है. तो आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर एक डिवाइसेज, यहाँ डिवाइसेज है, और इसका कोई इंटरफेस मान के चलो 1.1 है जो हम एचए के लिए यूज कर रहे हैं, और मान के चलो यहाँ एक स्विच है गाइज, एंड विद द हेल्प ऑफ स्विच अगेन हम इसका दूसरा बॉक्स का जो इंटरफेस 1.1 है जो हम नेटवर्क फेलोवर की यूज कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अब नेटवर्क फेलोवर. ओके, देन फ्लोटिंग आईपी क्या होता है गाइज? फ्लोटिंग आईपी क्या होता है कि मान लो कि चलो दो बॉक्सेज है. फ्लोटिंग आईपी सिमिलर काइंड्स ऑफ एचएसआर पे वीआरआईपी, जिसको भी पता है एचएसआर पे वीआरआईपी कंसेप्ट एक तरह से वर्चुअल आईपी होता है, which is generally used in the case of HA perspective, not like normal single devices. If there is single device to deploy, floating IP is not required. तो मान के चलो क्या होता है guys, यहाँ पर मान के चलो ये बहुत सारे पीपल आउटसाइड पे सिटेड ऑन द इंटरनेट, एंड उनको हमारे बैकएंड सर्वर को एक्सेस करना, विच इज डिप्लॉय एंड इम्प्लीमेंटेड बिहाइंड आवर ए5 लोड बैलेंसर, राइट? सो क्या होता है गाइस, फ्लोटिंग आईपी में हम क्या करते हैं, वर्चुअल आईपी क्रिएट कर लेते हैं सेम रेंज का. मान के चलो हमने यहाँ रेंज दिया है 10.10.10.10.10, और इस बॉक्स का आईपी है 10.11. तो हम एक फ्लोटिंग आईपी ले लेंगे सेम रेंज का, फॉर एग्जांपल 12 करके. ओके, सो इस केस में क्या होगा गाइस, ये सब जो इंड यूजर है उनके लिए गेटवे मान के चलो एक्सटर्नल पेपर के लिए 12 रहेगा. ओके, एंड दो हमें फ्लोटिंग आईपी बनाते पड़ते हैं, वन फॉर एक्सटर्नल एंड वन फॉर इंटरनल, एंड दिस इज वेरी वाइडली आस्क्ड इन द इंटरव्यू आल्सो. ओके, सो ये सब जो भी इंड यूजर जो इंटरनेट पर सीटेड उनके लिए जो 12 रहेगा वो हमारे गेटवे रहेगा. सो एंड मान के चलो एक बॉक्स डाउन डाउन गया, विद हेल्प ऑफ जी आर these devices, or we can say like this box mic will be active. We can say like at the moment, like if this box is active, so इसका जो इंटरफेस का मैक होगा वो एक्टिव रहेगा. इफ दिस गोज डाउन, इस इंटरफेस का जो मैक रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा, एंड ट्रैफिक विल हैंडल्ड बाय दिस वे, एंड यूजर को कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगा. सो फ्लोटिंग आईपी अभी समझो, इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल आईपी विच यूज इन केस ऑफ एचएसआर पे वीआरआईपी, वहां पर F5 में उसी तरह रहेगा. ओके, दैट्स इट. ओके, and then we have automatic sync, manual syncs. We will see all the things, don't worry about it. And वहां पर क्या होता है गाइज कि एक होता है टर्मिनोलॉजी फुल एंड इंक्रीमेंटल. सो हम हमेशा इंक्रीमेंटल कॉन्फ़िगर करके रखते हैं. इंक्रीमेंटल क्या होता है गाइज कि मान के चलो एक बॉक्स एक्टिव है, स्टैंड बाई है. ओके, सो आप जो भी चेंजेस इस पे कर रहे हो, मान के चलो आपने 10 वर्चुअल सर्वर बनाया, सो ओनली दैट चेंजेस शुड बी सिंक टू दिस बॉक्स, राइट? तो वहां पर हम इंक्रीमेंटल यूज करते हैं कि जो हमने चेंजेस किया अभी, दैट शुड बी ओनली सिंक. इन केस ऑफ फुल, मान के चलो आपने 10 चेंजेस किया, ओके, और पहले से भी 15 चेंजेस या 5 चेंजेस होंगे वर्चुअल सर्वर में, सो ऑल इज गोइंग टू बी सिंक, बट काइंड ऑफ ओवरराइड, विच इज नॉट गुड फ्रॉम डिजाइन परस्पेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी. सो इसीलिए हम इंक्रीमेंटल सिंक यूज करते हैं कि जो भी आप चेंजेस करो, इस पे ओनली दैट पार्ट शुड बी सिंक टू द स्टैंड बाई बॉक्स, राइट? So that is called incremental sync. Full means it's kind of override is going to sync all the things, and it is recommended to use manual syncs. Okay, so manual sync सही रहता है guys, because
ऑटोमेटिक आप करोगे, मे बी वी हैव डन सम मिस्टेक, राइट, वी हैव डन सम रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, एंड आप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। अगर आप मैनुअल करोगे तो यू शुड रियलाइज, एंड देन वी कैन सिंक इट, राइट। And everything's related to HA we need to configure in the device management only. Okay, so in interview also they ask the questions. So device management section में सब कुछ है, devices है, device group, device traffic groups, all the HA related things we need to configure on the device management. But yeah, if if you want to build two box in HA guys, at least आपको management configurations, internal, external VLAN, and the internal external we can say like our self IP, floating IP, only these things we need to configure, and on both boxes it is mandatory to configure manually। और उसके बाद में जो भी वर्चुअल सर्वर हो गया, नोड हो गया, पूल हो गया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, इट इज गोइंग टू बी सिंक टू द स्टैंड बाई। ओके, आफ्टर सिंक्स। Okay, so this is about the A5 theory, guys, and it's some terminology. And in our next sessions, we'll try to implement it in the lab, and some कुछ part वहाँ भी हम देखेंगे. And then upcoming session, I will cover some I rule concept also, and then we'll try to see some automation part, like how we can take the VPA status with the help of Python script, and it is very useful at the times of upgrade, guys, to do compare in between like before upgrade and after upgrade. Okay. So that's it. So I hope this session is informative for everybody, knowledgeable for everybody. This is totally free, guys. So my request from everybody to इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो सेशन को, वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and share in your circle. And let's meet on the next session. And thanks for your time and thanks for watching, guys.